हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डीएलएमबर्ट्स रेशियो टेस्ट का कुछ एग्जांपल और उसके बाद रेबिस टेस्ट। राइट, तो डीएलएमबर्ट्स रेशियो टेस्ट थोड़ा रिमेंबर कर लेते हैं कि उसका फॉर्मेट क्या है। कि लिमिट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un डिवाइडेड बाई un plus 1, that is l, then number 1 l less than 1, then divergent, right? Number 2 l greater than 1, then convergent, and number 3 l equal to 1, then test fail। ठीक है, तो एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल जो है दैट इज x डिवाइडेड बाई 1 into 2 प्लस एक्स स्क्वायर divided by 2 into 3 plus x cube divided by 3 into 4 plus so on। तो इसमें पहले nth टर्म निकालना है। तो हियर un इक्वल टू क्या होगा, x टू द पावर n डिवाइडेड बाई n, x to the power n divided by n into n plus 1, right? Divided by n into n plus 1, n into n plus 1। तो u n plus 1 का वैल्यू क्या होगा, u n plus 1 इक्वल टू x to the power n plus 1 डिवाइडेड by n plus 1 into n plus 2। Therefore limit n tends to infinity un divided by un plus 1 equal to limit n tends to infinity x to the power n divided by n into n plus 1 into n plus 1 into n plus 2 divided by x to the power n plus 1। That is limit n टेंस टू इन्फिनिटी, n प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, उसमें बचेगा 1 प्लस 2 बाई n इंटू नीचे x। As n tends to infinity this should be 0, then we get 1 by x। Now if 1 by x greater than 1, this implies x less than 1 implies summation of un is convergent, right? Number 2, if 1 by x less than 1, that is x greater than 1, this implies summation of un is divergent। But if 1 by x equal to 1, this implies x equal to 1 टेस्ट फेल। मतलब जब x का वैल्यू 1 है देन टेस्ट फेल। तो x इक्वल टू 1, when x इक्वल टू 1, when x equal to 1 we have un इक्वल टू क्या होगा, x का वैल्यू जब 1 है देन वी हैव n इंटू n प्लस 1, राइट? देन we choose vn, we choose vn। vn कैसे चूज करते हैं कंपैरिजन टेस्ट में, सिर्फ n का पावर लेते हैं। तो ऊपर में n तो टर्म नहीं है, नीचे है n और n मतलब n स्क्वायर, तो vn n स्क्वायर। नेक्स्ट काम क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un by vn, that is limit n tends to infinity
1 by n into n plus 1 into n square. तो n cancel out हो जाएगा, that is limit n tends to infinity 1 by 1 plus 1 by n, that is 1, a finite value, since summation of Vn, that is summation of 1 by n square. तो अकॉर्डिंग टू पी टेस्ट पावर n का पावर पॉजिटिव माने ग्रेटर देन 1 है, देन Vn इज कॉन्वर्जेंट, राइट, इज कॉन्वर्जेंट। और कंपैरिजन टेस्ट के हिसाब से जब फाइनाइट लिमिट बनता है तो Vn कॉन्वर्जेंट होगा, देन Un शुड बी कॉन्वर्जेंट, दिस इम्प्लाइज Un summation of Un is also convergent, राइट। तो क्या मिला कि नंबर वन आंसर क्या है, नंबर वन x लेस देन इक्वल टू 1 implies summation of Un is convergent, right, and number 2 x greater than 1, then summation of Un is divergent. This implies summation of Un is divergent, right। और एक एग्जांपल देख लेते हैं सेम टाइप का ही, नंबर 2 एग्जांपल 2 के 2x सीरीज क्या है, 2x प्लस 3x स्क्वायर बाई 8 प्लस 4x क्यूब बाई 27, राइट, प्लस डॉट 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 प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई x n क्यूब into x to the power n plus dot dot dot. So here Un equal to n plus 1 divided by n x to the power n, right। Next we have to choose Un plus 1, Un plus 1 choose करना है, तो that is n plus 2 divided by n plus 1 x to the power n plus 1. Now limit n tends to infinity, limit n tends to infinity Un by Un plus 1, क्या मिलेगा, Un by Un plus 1, that is equal to limit n tends to infinity, Un का वैल्यू क्या है, that is n plus 1 by n x to the power n into n plus 1 by n plus 2 into x to the power n plus 1, right, that is limit n tends to infinity n plus 1 whole square divided by n into n plus 2 into 1 by x, that is limit n tends to infinity 1 plus 1 by n divided by 1 plus 2 by n, this should be whole square into 1 by x equal to 1 by x. तो as per D'Alembert's ratio test, if 1 by x, if 1 by x greater than 1, this implies x less than 1, then this implies summation of Un is convergent, right, and 1 by x less than 1, this implies x greater than 1, this implies summation of Un is divergent. And last property, that is when x equal to 1, when 1 by x equal to 1, that is this implies x equal to 1, टेस्ट फेल, टेस्ट जब फेल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, x के जगह पे 1 पुट करके हम लोग
इन जनरल जो है कंपैरिजन टेस्ट यूज करते। तो x इक्वल टू 1 वी हैव यू एन इक्वल टू n+1। x के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे 1, देन वी हैव n+1 डिवाइडेड बाई n क्यूब, राइट।